वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं चिंतामणि। आज की एक्सरसाइज हमारी 10.3 क्वेश्चन 11th एंड 12th। सो नाउ क्वेश्चन 11th। शो दैट वेक्टर A मॉडुलस वेक्टर B प्लस मॉडुलस वेक्टर B वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर मॉडुलस वेक्टर A वेक्टर B माइनस मॉडुलस वेक्टर B वेक्टर A for any two non-zero vectors, vector A and vector B. So now, solution. Modulus of vector A, vector B plus modulus of vector B, vector A dot modulus of vector A, vector B minus modulus of vector B, vector A equal 0. Means scalar product is 0 if two vectors are perpendicular. So implies modulus of vector A vector B into modulus of vector A vector B minus modulus of vector A vector B into modulus of vector B vector A plus modulus of vector B vector A into modulus of vector A vector B minus modulus of vector B vector A into modulus of vector B into vector A equal 0. Implies modulus of vector A square modulus of vector B square minus modulus of vector A modulus of vector B into B vector dot vector A plus modulus of vector B modulus of vector A into vector A dot vector B minus modulus of vector B square modulus of vector A square equal 0. Implies vector A modulus square vector B modulus square minus vector B modulus square vector A modulus square equal 0. Implies 0 equal 0. Hence, both vectors are perpendicular. Now question 12. If A dot A equal 0 and A dot B equal 0,
then Bharat can be conclude about the vector B. So, solution. Vector A dot vector A equal 0 implies modulus of vector A square equal 0 implies modulus of vector A equal 0. Now A dot B vector equal 0 as modulus of vector A is 0. So vector A dot B is 0. Satisfy that vector B can be any vector. नाउ क्लास ओवर। वीडियो से में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स के सजेस्ट कीजिए। अदर वीडियोज के रिगार्डिंग चिंता वाली क्लासेस 585 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खुश रहिए। थैंक्स।